Okay, students. So let's get started with IGCSE Physics 0625, Paper 4, Variant 2, May June 2025. तो बेटा ये पेपर 4 है, वेरिएंट 2 है, मई जून 2025. Let's further move ahead. Figure 1.1 is a speed time graph for an ice skater. Okay, so this is a speed time graph for an ice skater. Okay, speed time graph देखते ही आपके जहन में दो की पॉइंट्स आने चाहिए. What are those key points? Gradient of speed time graph is equals to what? Yes, gradient of speed time graph is equals to acceleration, and area under speed time graph is equals to what? Distance. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. Describe the motion of the skater from time t is equals to 0 till time t is equals to 3 seconds. भाई skater का motion क्या है from time t is equals to 0 till time t is equals to 3 seconds. Can you realize from time t is equals to 0 till time t is equals to 3 seconds, the skater is moving at a constant speed या फिर constant velocity. From time t is equals to 0 till 3 seconds, the skater is moving at constant speed. Simple as that, nothing complicated here. You have to calculate the distance traveled by the skater from time t is equals to 0 till 3 seconds. 0 से 3 seconds तक आपने distance निकालना है. What will you do? You will calculate the area under this graph from 0 till 3 seconds. आपने क्या करना है बेटा? 0 till 3 seconds तक एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है. You have to calculate this entire thing. एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है फ्रॉम 0 till 3 seconds. ये सारा एरिया निकालना है. All this area. This is basically what? This is basically a rectangle. इस रेक्टेंगल की हाइट क्या है या लेंथ क्या है? यू कैन से दिस लेंथ इज 11. ओके, दिस इज इन द मिडिल 11. इसकी विड्थ क्या है? 3. व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ. दैट एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल्स टू व्हाट? 11 into 3, that is equals to 33 meters. Easy peasy lemon squeezy. आगे बढ़ा जाए. चलो, let's move ahead. Now, state what is meant by deceleration. I think I should zoom in a bit. Okay, state what is meant by deceleration. हाँ जी, deceleration का मतलब क्या होता है? Rate of decrease of velocity. Rate of decrease of velocity is known as deceleration. Okay. Draw a tangent at time t is equals to 9 seconds. Use the tangent to calculate the deceleration of the skater at t is equals to 9 seconds. अच्छा जी, आपने deceleration निकालनी है t is equals to 9 seconds. Can you realize this is t is equals to 9 seconds? Okay. First of all, let's draw a tangent at this point. Okay. Let's draw a tangent at this point. Let's choose a very good color. Yeah, I think blue will be visible here. एक ब्लू कलर का टेंजेंट बना देते हैं यहाँ पे. 1 second, let's do it like this. Make sure that this exactly sits here. तो ये आ गया आपका टेंजेंट. परफेक्ट. दिस इज थोड़ा सा इसको नीचे ना कर दे. या आई गेस दैट्स परफेक्ट. थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं. Yeah. Perfect. This is your tangent. Now, once you have drawn the tangent, what will you do? Pick 2 points on this tangent. बेटा, एक दफा आपने टेंजेंट बना लिया, उसके बाद आपने 2 पॉइंट्स पिक करने हैं ऑन दिस टेंजेंट. व्हाट आर दोस 2 पॉइंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, you have this point. That is, make sure the points are far away from each other. ये पॉइंट ले लेते हैं. This is x axis में 7, y axis में क्या हो जाएगा? Y axis में this is this point, which is 2.8. Okay. And which should be your second point? Second point कौन सा ले? Make sure the points are far away from each other. You can also take this wala point. This is 9 and
अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस इज 9 एंड 1.6, यू कैन टेक दिस पॉइंट एज वेल, बट बेटा जितना फार अवे हो सके उतना ले लो, बट आई एम यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। 7 एंड 2.8, व्हाट वाज द अदर पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट क्या था? 9 एंड 1.6, ओके ओके ओके, 9 एंड 1.6, ओके। Let's say this is x1, let's say this is y1, let's say this is x2, let's say this is y2. Can you calculate the gradient here? Yes. Y2 minus y1 divided by x2 minus x1. What is y2? 1.6. What is y1? 2.8. What is x2? 9. What is x1? 7. Negative 1.2 divided by 2 is your deceleration. What does your deceleration comes out to be? 1.2 divided by 2. This comes out to be negative 0.6 ms minus 2. So your deceleration का answer comes out to be 0.6 ms minus 2. देखो, you will only write the magnitude here. Why? Because अगर deceleration लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो गया है बेटा, आप सिर्फ 0.6 ms माइनस टू लिख दो। नेगेटिव का साइन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया है ड्यू टू द डिसैलरेशन का वर्ड। लेट्स फर्दर मूव अहेड। I think this is the next question. Yeah. Figure 2.1. Let's थोड़ा सा zoom out ना कर लें. Let's see if we can do that 200% सही. ठीक है. Okay. Figure 2.1 shows a balanced uniform meter rule of wood. Okay, uniform का मतलब क्या होता है सर? Uniform का मतलब ये होता है weight acts in the middle. Weight acts in the middle is basically what we mean by uniform. Okay. The width of the meter rule is this, okay, and the thickness of the meter rule is this. Define the moment of a force in word. आपने moment of a force को define करना है. Moment of a force is what? Product of force and perpendicular distance, and perpendicular distance between force and pivot. Perpendicular distance between force and pivot. Simple. Nothing complicated here. On figure 2.1, mark the position of the center of gravity of the meter rule with a point labeled x. Label the distance of x from the 0 centimeter end of the rule. अच्छा जी, बेटा x को आप कहाँ पे मार्क करोगे? X is the center of gravity in the middle of the meter rule, somewhere here. X को मार्क करना है सिर्फ. Let's do it like this. This is your point x. The distance of point x from the 0 centimeter mark will be what? 50 centimeter. Why? Because this is a uniform meter rule. बेटा यूनिफॉर्म मीटर रूल में आपका weight and mass acts in the middle. That means the center of gravity will also be in the middle. Okay. Show that the mass of the meter rule is this. You have to calculate the mass of the meter rule. Sit back and relax. No need to panic. First of all, can you see that the meter rule is balanced? बेटा मीटर रूल आपका बैलेंस्ड है. बैलेंस का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. ओके. और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है वहां पे क्या एक्ट करेगा? वहां पे एक्ट करेगा वेट, दैट इज इक्वल टू द मास इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अब थोड़ा सा सेट बैक एंड रिलैक्स. Now, you know, since the meter rule is balanced, anti-clockwise movement will be equal to clockwise movement. Okay. बेटा clockwise movements कौन से forces generate कर रही हैं? The 0.12 Newton वाली force. 0.12 Newton force multiplied by the distance from the pivot. What is the distance from the pivot? 42 centimeter पे आपका pivot है. This is 80 centimeter. What is the distance between the pivot and 0.12 Newton की force? 80 minus 42 centimeter, that is 38 centimeter. This comes out to be 0.38. Calculate कर लो ये clockwise movement क्या आता है? What does this clockwise movement comes out to be? 0.0457
6 न्यूटन मीटर। अच्छा जी, क्या कोई और चीज क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रही है? यस, दिस वेट इज आल्सो जनरेटिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट। W into the distance from the pivot. What is the distance from the pivot to X? That is 8 centimeter multiplied by 0.08. Clockwise moment is equal to 0.08. W is your answer. What will be your anti-clockwise moment? Due to the 0.34 Newton force. Anti-clockwise moment क्या हो जाएगा? 0.34 Newton वाली force. This is acting at the 10 centimeter mark. What is the distance of this force from the pivot? 42 सेंटीमीटर पे pivot है, ये force 10 सेंटीमीटर पे लग रही है. What is the distance? 42 minus 10, that is equals to 32 centimeter multiplied by 0.32. Anti-clockwise moment comes out to be what? 0.34 into 0.32. This comes out to be 0.1088 Newton meter. अब क्या करोगे बेटा? यू विल से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज क्या है? 0.1088. क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? 0.08 W प्लस 0.0456. ओके. How will you calculate weight? Easy. 0.1088 minus 0.0456 divided by 0.08 is equals to W. What will your answer come out to be? 0.1088 minus 0.0456 divided by 0.08. Weight की वैल्यू क्या आ जाएगी? Weight comes out to be 0.79. लेकिन you had to calculate mass. Weight is equals to mg. Weight क्या है? 0.79. Mass हमने निकालना है. G की वैल्यू क्या है? 9.8. Can you calculate mass? 0.79 divided by 9.8. What does your value for mass comes out to be? Answer divided by 9.8. Mass की value comes out to be 0.081 kg. Easy peasy lemon squeezy. आ गई आपकी mass की. Now you have to calculate the density of the meter rule. बेटा डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? मास ओवर वॉल्यूम. अच्छा जी सर, मास क्या है? 0.081. हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम? डू यू नो द लेंथ ऑफ द मीटर रूल? यस, दैट इज 100 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो. दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर. देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ ऑफ द मीटर रूल इज इक्वल्स टू 1 मीटर. ब्रेथ क्या है? दिस ब्रेथ कहाँ गया? ये रही. 2.6 into 10 raised to the power of minus 2. 2.6 into 10 raised to the power of minus 2 meter is your breadth. What is your height or your thickness? Height या thickness क्या हो गई? 6 into 10 raised to the power of minus 3. 6 into 10 raised to the power of minus 3. Okay. Can you calculate the density? Yes. 0.081. लेंथ क्या है? 1. ब्रेथ क्या है? 2.6 10 raised to the power of minus 2 multiplied by height क्या है? 6 into 10 raised to the power of minus 3. What does your density comes out to be? हाँ जी, डेंसिटी क्या आ जाती है बेटा? निकालो जरा. डेंसिटी क्या आ जाती है? डेंसिटी comes out to be 520 kg per meter cube. सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. क्या? सेकेंड ऑफ ऑल आई वॉन्टेड टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेटा कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको जी की वैल्यू नहीं गिवन होगी, कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको जी की वैल्यू नहीं गिवन होगी, यू विल टेक जी एज 9.8. ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर एग्जामिनेशन में मैं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था ना कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, तो यू टेक जी एज 9.8. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. डिफाइन मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity is your momentum. Okay, let's further move ahead. Figure 3.1 shows two toy trains A and B on a track. अच्छा जी, दो trains हैं A and B on a track.
The mass of train A is 0.45 kg. The mass of train B is 0.21 kg. The trains do not have motors. Okay. Train A move. Train A travel towards train B and they collide. Okay. Immediately before the collision. Okay. So this is before the collision. Before the collision, the velocity of train A is 0.34 meters per second to the right, and the velocity of train B is 0.12 meters per second to the left. The trains stick together when they collide. Okay. Calculate the velocity of the train immediately after the collision. आपने निकालनी है बेटा velocity of the trains immediately after the collision. How will you do that? You have to calculate the velocity of the trains immediately after collision. Okay. So कौन सी चीज कह सकते हैं हम यहाँ पे? You can apply principle of conservation of momentum. You can say that the total momentum before collision is equals to the total momentum after collision. बेटा before collision क्या momentum होगा total? Train A is traveling with a velocity of 0.34 meters per second. Train B is traveling with a velocity of 0.12 meters per second. Okay. Now, can you calculate the total momentum before collision? Mass of A into velocity of A plus mass of B into velocity of B. Can you calculate the momentum after collision? Yes. Mass total into velocity total, because the trains are sticking together when they collide. So you will take the total mass. Okay. What is the mass of A? 0.45. What is the velocity of A? 0.34. 0.45 into 0.34 plus. What is the mass of B? Mass of B क्या है? 0.21. What is the velocity of B? This is 0.12 towards the left. बेटा velocity of B क्या है? 0.12 towards the left. That's why it will become negative. देखो ये velocity of B towards the left लग रही है. Momentum is a vector quantity. Everything towards the right is taken as positive. Everything towards the left is taken as negative. Okay. Is equals to what? Total mass क्या है आपका? 0.45 plus 0.21. Sir, why are you taking the total mass? Because the trains stick together after they collide. 0.45 plus 0.21 into the total velocity Vt. Okay. Can you calculate the answer? 0.45 into 0.34 minus 0.21 into 0.12. This comes out to be what? 0.1278 is equals to what? 0.45 plus 0.21, 0.66 Vt. Can you calculate the total velocity? Yes, 0.1278 divided by 0.66 is equals to your total velocity. Can you calculate this total velocity? 0.1278 divided by answer. The total velocity comes out to be what? 0.19 meters per second. और बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो दिस वेलोसिटी इज पॉजिटिव? All the positive vectors are towards the right side. That's why the velocity will also be towards the right side. Easy peasy, lemon squeezy. कोई सवाल है तो पूछो. What have I actually done? मैंने कहा total momentum before collision is equals to total momentum after collision. Before collision, you had the 0.45 wala trolley moving towards the right with a velocity of 0.34. Before collision, your trolley B, your train B, has a mass of 0.21. It is moving towards the left. That means its velocity will be negative 0.12. After collision, what is the total mass? 0.45 plus 0.21 into the total velocity. The total velocity comes out to be 0.19 acting towards the right. Simple. Let's further move ahead. A different train is traveling with a momentum of 0.65. This is your initial momentum. The train slows down and stops. Okay, what is the final momentum? Zero. After time,
2.1 seconds. Calculate the average force. Average force किसके इक्वल होगी? Change in momentum divided by change in time के इक्वल. What is the change in momentum? Initial momentum क्या है बेटा? 0.26. Final momentum क्या है? 0. Final momentum minus initial momentum divided by time. What is the final momentum? 0. Initial momentum is 0.26 divided by change in time, that is 2.1. Can you calculate the answer? भाई आंसर निकाल सकते हो. Negative 0.26 divided by 2.1. This comes out to be what? Negative 0.12 Newton is your average force. बेटा आपकी एवरेज फोर्स क्या आ गई? -0.12 न्यूटन. सिंपल एज दैट. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. कुछ भी हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया यहाँ पे. ओके, लेट्स फर्दर मूव अहेड. फिगर 4.1 shows two metal containers A and B. अच्छा जी, ये दो मेटल कंटेनर्स हैं A and B. ओके. Container A has a dull black outer surface. Container B has a shiny white outer surface. अच्छा जी, container B का surface क्या है? Shiny white. Container A का surface क्या है? Dull black. Okay. A and B both contain very hot water at time t is equal to 0. The temperature of water in each container is recorded every minute. अच्छा जी, temperature of water in each container is recorded every minute. Okay. State which container has the largest temperature change over the first 5 minutes. Explain your answer. बेटा हमने explain करना है which container will have the largest temperature change over the first 5 minutes. So you can say the container with the dull black surface or container A has the largest change in temperature. Why? Because dull black surfaces are good emitters of infrared radiation. You will say container A has the largest temperature change as dull black surfaces black surfaces are good emitters of heat. Okay, let's read out part 2. After 30 minutes, the temperature of water in container A remains constant. अच्छा जी, 30 minutes के बाद temperature of water in container A remains constant. State in terms of energy transfer why the temperature remains constant. हमने बताना है why the temperature remains constant in terms of energy transfer. बेटा होता ये है कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, when your temperature becomes constant, what happens? The energy that the container transfers to the surrounding is equal to the energy that the container receives from the surrounding. जब ये दोनों एनर्जीज टू एंड फ्रॉम एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी, then there will be no change in temperature or your temperature becomes constant. Simple. ठीक है? All good? All good? Yes, all good. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. How will you write this? How will you write this, बेटा? You will say that the temperature remains constant. Why? The temperature remains constant. Why? Because the rate of energy transfer from the container से जितनी एनर्जी निकल रही है is same as the container जितनी एनर्जी बाहर दे रहा है. ठीक है? जितनी एनर्जी कंटेनर से अंदर जा रही है उतनी ही एनर्जी बाहर निकल रही है. लेट्स से द कंटेनर इज टेकिंग इन 5 joules from the surrounding. It is also giving out 5 joules to the surrounding. The overall energy transfer is zero. Hence, there is no change in temperature or the temperature remains constant. How will you write the answer? You will say a transfer, rate of transfer of energy, rate of transfer of energy from container from
container is equal to what? Is equal to the rate of transfer of energy to the container. ठीक है? From the container and to the container वाली energy same हो गई हैं. That's why temperature remains constant. The experiment is repeated without the lids on the container. State the name of additional method of energy transfer that occurs. अच्छा जी. अब ये आप lid remove कर रहे हो. You are removing this lid. Which energy transfer method will also happen now? Convection. Convection का process भी होना शुरू हो जाएगा. Let's further move ahead. Figure 4.2 shows a metal pan with a wooden handle. Okay. Explain why there is a much greater rate of transfer of energy through the metal than through the wood. हमने बताना है कि भाई ये वुड के थ्रू हमारा एनर्जी ट्रांसफर कम क्यों हो रहा है कंपेयर टू द मेटल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से वुड इज एन इंसुलेटर, या इस तरह कह सकते हो, wood transfers heat. Wood only transfers thermal energy by molecular vibrations. Wood only transfers thermal energy by molecular vibrations. However, 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 the steel pan, और ये कौन सा है, the metal pan, however, the metal pan, the metal pan transfers energy by molecular vibrations, by molecular vibrations and movement of free electrons. Okay. Hence, hence. Last point क्या लिखोगे? This is a 3-marker question. What will you say? Hence, metal is a good thermal conductor, whereas wood is a poor thermal conductor. Hence, metal is a good thermal conductor, whereas wood is a poor thermal conductor. Easy peasy, lemon squeezy. आगे बढ़ते हैं. Okay, जी, let's see this. Describe an experiment to determine the speed of sound in air. State the apparatus required, the measurement taken, and how to calculate the speed of sound in air from the measurement. You may draw a label diagram as part of your answer. Now you can write two methods here. बेटा मैंने दो मेथड्स पढ़ाए थे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए. हाँ जी. कौन से दो मेथड्स मैंने पढ़ाए थे? एक फ्लेयर गन वाला मेथड था. डू यू रिमेम्बर टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड? एक तो फ्लेयर गन वाला मेथड था. दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू राइट हियर. अच्छा जी सर, कौन सा मेथड कह रहे हैं? हम तो भूले पड़े हुए. वी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. ओके, लेट मी शो यू. To calculate the speed of sound, the first method which we would do is to utilize a flare gun. टीचर के पास एक फ्लेयर गन होती थी. ही यूज टू फायर अ फ्लेयर गन. फ्लेयर गन से दो चीजें एमिट आउट होती थी, स्मोक एंड साउंड. As soon as the students see the smoke, they start the stopwatch. As soon as the students hear the sound, they stop the stopwatch. ये आपका टाइम आ जाता था. टाइम आ गया, उसके बाद आपने क्या किया? एवरेज टाइम निकाल लिया ऑफ ऑल दिस. देन व्हाट एल्स डिड यू डिड? You measured the distance between the teacher and the student. That comes out to be 1000 meters. Distance आ गया, average time आ गया, divide कर दिया, speed of sound आ गई बेटा. Simple. This was the first method to calculate the speed of sound. Speed of sound calculate करने का पहला method क्या था बेटे? You take a flare gun, और फ्लेयर गन में से आप स्मोक और साउंड दोनों प्रोड्यूस करो.
As soon as the students see the smoke, they start the stopwatch. As soon as the students hear the sound, they stop the stopwatch. आपने time measure कर लिया. You measure the distance between the teacher and the students using a meter rule. स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम किस तरह निकलेगा? बाय टेकिंग द सम ऑफ द टाइम कैलकुलेटेड बाय एवरी स्टूडेंट डिवाइडेड इट बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट. एक और मेथड भी लिखवाया था बेटा, एक और मेथड भी लिखवाया था. डू यू रिमेम्बर? दैट वाज मच एक्यूरेट मेथड. एक और एक्यूरेट मेथड भी लिखवाया था ये बात. यू टेक अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स. आप एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स ले लो, एक बेल ले लो, एक लाउड स्पीकर ले लो, एनीथिंग लाइक दैट. You take a sound producing source. Okay. Once you take a sound producing source, फिर क्या होगा? आप दो माइक्रोफोन्स प्लेस कर दो. माइक्रोफोन M1, माइक्रोफोन M2. You take a sound producing source and you place two microphones M1 and M2. Okay. दोनों माइक्रोफोन्स को आप CRO के साथ कनेक्ट कर दो. कैन यू रियलाइज माइक्रोफोन 1 की एक पीक आ रही है, माइक्रोफोन 2 की एक पीक वैल्यू आ रही है ऑफ साउंड. ओके. क्या करेंगे सर यहाँ पे? देखो इस एक्सपेरिमेंट को मैं शुरू से समझा देता हूँ. यू टेक अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, यू हैव द माइक्रोफोन 1, यू हैव माइक्रोफोन 2. दोनों माइक्रोफोन्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, दैट इज 12 मीटर. ओके. दिस इज द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स. लेट्स से अ लाउड स्पीकर, अ बेल, एनीथिंग. दिस इज फर्स्ट माइक्रोफोन, सेकंड माइक्रोफोन, दोनों सीआरओ से कनेक्टेड है. दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 12 meters. When you connect both of these microphones with a CRO, you will get a peak value for microphone 1, you will get a peak value for microphone 2. Can you realize the sound की peak value between microphone 1 and microphone 2 is at a distance of 8 centimeter? दोनों peak values के बीच में कितना distance है? 8 centimeters का. 1 centimeter is equals to 4 microseconds. बेटा 1 सेंटीमीटर या एक बॉक्स इज इक्वल टू 4 माइक्रोसेकेंड्स. तो टू पीक वैल्यूज के बीच में कितना डिस्टेंस है? 8 सेंटीमीटर का. टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 8 into 4 milliseconds. दैट कम्स आउट टू बी 32 milliseconds. If 1 centimeter on the CRO is equal to 4 milliseconds, 8 centimeter will be equal to 32 milliseconds. Can you calculate the speed of sound? Yes. The distance between the two microphones, that is 12, divided by the total time taken, your speed of sound comes out to be 375 meters per second. Let me revise this experiment again. आपने एक sound source लिया, you place two microphones, measure the distance between two microphones, connect the microphones with the CRO. The first microphone is producing a peak value of sound here. The second microphone is producing a peak value of sound here. What is the distance between the two peaks? 8 centimeter. CRO पे 1 centimeter is equals to 4 milliseconds. 8 centimeters कितना time represent करेगा? 32 milliseconds. Divide distance by time, you get your final answer of speed. अगर एग्जाम में आपके पास लिखने को आता है ना, to how to calculate the speed of sound या tell an experiment to calculate the speed of sound, I would prefer you to write this, क्योंकि इसमें आपको लिखना कम पड़ेगा, आप इजीली आराम से लिख लोगे. दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में you have to define a CRO, time based supply, everything. That becomes difficult at times. तो आप सिंपल रखो, आप जो है फ्लेयर गन वाला एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर दो. Bluetooth is used to connect a mobile cell to headphones. Okay. State the name of the region of electromagnetic spectrum used by Bluetooth. अच्छा जी, Bluetooth कौन से region की electromagnetic rays use करता है? Radio waves. Okay. State the speed of electromagnetic waves in air. 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second. Simple. बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है एयर में? 3 into 10 raised to the power of 8 ms minus 1. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आगे बढ़ते हैं. The frequency of the Bluetooth network is this. अच्छा जी, ये frequency of the Bluetooth network आ गया. Calculate the wavelength of the waves. You will say V is equals to f lambda. Velocity क्या है? 3 into 10 raised to the power of 8.
फ्रीक्वेंसी क्या है 2.48 गीगा हर्ट्ज। गीगा का मतलब क्या होता है बेटा 10 raised to the power of 9। 10 raised to the power of 9। You have to calculate the wavelength lambda. Can you calculate the wavelength lambda? हाँ जी बिल्कुल। 3 into 10 raised to the power of 8। 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 2.48 into 10 raised to the power of 9 gives you your wavelength। wavelength की वैल्यू क्या आती है बेटा? कैन यू कैलकुलेट द वेवलेंथ की वैल्यू? शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। वेवलेंथ की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.12 meters। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते हैं जी। ओके, फिगर 6.1 is a full sized diagram of a lens and an image eye of the object। अच्छा जी, ये image eye of the object given है, ठीक है। This is a full size diagram of a lens and an image eye of the object। Okay, the focal length of the lens is 3 centimeter। अच्छा जी, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। On figure 6.1, mark 2 points with labels F to show the position of the principal focuses or focal point। Let's say आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया एंड 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। On figure 6.1, draw two rays from the image to locate the object। Draw the object and label it O। You have to draw the object and label it O। ऑब्जेक्ट को किस तरह लोकेट करेंगे बेटा? हाउ विल यू लोकेट द ऑब्जेक्ट? कैसे लोकेट करोगे ऑब्जेक्ट को? कोई आइडिया है? यू हैव टू डू द रिवर्स प्रोसेस। आपने क्या करना है? रिवर्स प्रोसेस करना है। अच्छा बेटा, आप यहाँ पे क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज यू विल ड्रॉ द फर्स्ट रे। हमेशा इमेज से हमारी कौन सी रेज निकल रही होती थी? वन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपकी पहली रे हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ रे passing through the optical center like this। This is a ray passing through the optical center। Okay, this is your first ray। बेटा सेकंड रे किस तरह की बनाओगे? हाँ जी, सेकंड रे किस तरह की बनाओगे? The second ray will be a ray passing through the focal point like this। सेकंड रे क्या हो जाएगी? A ray passing through the focal point like this, इस तरह से। Let me make it smaller as well। Yeah, somewhat here। Let's rotate it further। ठीक है। A ray passing through the focal point hitting the converging lens like this। ठीक है, एक रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट हिटिंग द कन्वर्जिंग लेंस लाइक दिस। इसको क्या होगा बेटा? आफ्टर हिटिंग द कन्वर्जिंग लेंस दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। लेट्स कीप इट हियर। The intersection of these 2 points will give rise to the image। बेटा यहाँ पे मैंने will give rise to the object। यहाँ पे मैंने क्या किया है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। देखो, यूजुअली क्या होता था इन द डायग्राम ऑफ लेंसेज? क्या होता था याद है कुछ? लेंसेज का चैप्टर बच्चों याद है? थोड़ा सा भी अगर याद हो। लेंसेज के चैप्टर में हाउ डिड वी ड्रॉ लेंस डायग्राम्स? लेंस डायग्राम्स किस तरह ड्रॉ करते थे? लेंस डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए वी यूज टू यूज टू रेज। लेंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बेटा हम क्या करते थे? हम दो रेस का इस्तेमाल किया करते थे, है ना? याद आ रहा है कुछ? लेंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम दो रेस का इस्तेमाल किया करते थे। वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकल लेंथ, वन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन ये क्या होता था? ऑब्जेक्ट इन द क्वेश्चन, इन द एग्जामिनेशन हमें क्या गिवन है? हमें इमेज गिवन है बेटा।
हमें इमेज गिवन है और हमने कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट लोकेट कराना है. तो द फर्स्ट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल रिमेन लाइक दैट. सेकेंड रे क्या होगी? Second ray will pass through the focal point, hit the converging lens, become parallel to the principal axis. The intersection point is your object. आई बात समझ में? देखो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने रिवर्स प्रोसेस कर दिया. यहाँ पे जो इमेज से रेज निकल रही है ना, हमने वो बनाई. बेटा बेसिकली अब हमने क्या किया है, इमेज वाली रेज बनाई. वन पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट लोकेट कर लिया है. इमेज से रेज निकाल के ऑब्जेक्ट लोकेट किया है. उल्टा काम किया है कंपेयर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग थ्रू आउट आवर एंटायर लाइफ. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. द ऑब्जेक्ट इज मूव सो दैट इट इज 6 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस. अच्छा जी, अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस रख दिया. दैट इज एट टू फोकल पॉइंट्स. यहाँ पे फोकल पॉइंट एफ क्या था? 3 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव प्लेस योर ऑब्जेक्ट एट 2f. स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म. यहाँ पे आ जाओ. अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो हाउ विल योर इमेज लुक लाइक? रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज. यू कैन राइट एवरीथिंग. रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज. सो बेटा मेक श्योर करो कि आप साथ साथ नोट्स को भी रेफर कर रहे हो सेम साइज. चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, फिगर 6.2 shows a simplified diagram of an eye with rays from a nearby object. The eye needs correction for long sightedness. अच्छा जी, आपको कौन सी डिजीज है लॉन्ग साइटेडनेस की? ओके, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है? यू कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते. ओके. On figure 6.2, draw the path of the light rays inside the eye to show the effect of long sightedness. अच्छा जी, long sightedness का effect हमने show करना है. How will we do that? If your eye is long sighted, बेटा अगर आपकी eye long sightedness face कर रही है, क्या होगा? Your image will form behind the retina. Image कहाँ form करेगी? Behind the retina, like this. Like this. इस तरह इसको हमने यहाँ पे रख दिया. एंड probably like this. ठीक है, image is forming somewhat behind the retina. I think I have done a mistake here. ये वाली लाइन थोड़ी सी हमारी crooked बनी है. 1 second. Yeah, now it's fine. So your image is forming behind the retina somewhere here. ठीक है, image कहाँ form हो रही है? Behind the retina. A lens is used to correct long-sightedness. Draw a lens for this correction. कौन सा लेंस यूज होता है लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए? कन्वर्जिंग लेंस. हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस लुक्स लाइक? ओह आई एम सो बैड एट ड्राइंग. कन्वर्जिंग लेंस की क्या डायग्राम होगी? दिस थिंग. लेट्स ड्रॉ इट. ठीक है, या फिर इस तरह का कन्वर्जिंग लेंस होता है. सो लेट्स ड्रॉ इट. लेट्स ट्राई माय बेस्ट. आई कैन डू वन थिंग हियर. Yeah, this is your converting lens. Simple. Yeah, this is your converting lens. Simple आ गया आपका converting lens. आगे बढ़ते हैं. State what is meant by an electric field. Electric field की क्या definition होती है भाई? Region where an electric charge experiences a force. It is a region where an electric charge experiences a force. Region where an electric charge experiences a force. Experiences a force.
Simple. A plastic rod is rubbed with a cloth. Okay. The plastic rod becomes negatively charged and the cloth becomes positively charged. Explain why. Plastic rod negatively charged क्यों हो रही है? Because it is gaining electron. The cloth becomes positively charged. Why? Because it is losing electron. So what will you say? The friction between between plastic rod and cloth causes electrons to be excited. Electrons, electrons. या अब ये कह सकते हो the cloth loses electrons and becomes positively charged. Positively charged. Plastic rod gains electron, gains electrons, and becomes negatively charged. Simple. Let's further move ahead. The negatively charged plastic rod is suspended by an insulating thread. Okay. Another negatively charged plastic rod is brought close to the suspended rod. State what happens to the suspended plastic rod. It experiences a repulsive force and moves away. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड के सामने आप एक और नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड ला रहे हो तो इट विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स एंड द प्लास्टिक रॉड विल मूव अवे डिस्क्राइब द डिफाइन किलोवाट आवर इन वर्ड्स आपने किलोवाट आवर को डिफाइन करना है व्हाट विल यू से एनर्जी ट्रांसफर्ड in 1 hour at a rate of 1 kilowatt hour. You will say कि if a power of 1 kilowatt is applied for 1 hour, the energy transferred is supposed to be 1 kilowatt hour. So you will say a power of 1 kilowatt applied for 1 hour produces or is equivalent to energy of 1 kilowatt hour. A small lamp illuminates an electrical oven. The lamp has an output power of this, okay, and operates for 220 hours in 1 year. The potential difference across the lamp is this. Calculate the energy transferred by the lamp in 1 year. अच्छा जी आपने energy transfer निकालनी है in kilowatt hour. Energy transferred is equal to power into time. Power को kilowatt में करते हैं 25 divided by 1000. Time क्या है 220. What does your energy comes out to be? हाँ जी energy किसके equal आ रही है 25 divided by 1000 into 220. This comes out to be 5.5 kilowatt hour. You have to calculate the current in the lamp. कैसे निकालोगे? Power output is equal to current into voltage. Power output क्या है 25. Current नहीं पता. Voltage क्या है 230. Can you calculate the current? 25 divided by 230 is equal to your current. What does your answer comes out to be? 25 divided by 230. This comes out to be 0.11 ampere as your current. 0.11 ampere is your current. Okay, आगे बढ़ते हैं बेटा. Now, let's see this question. Okay. Figure 8.1 shows a simplified diagram for an AC generator. Okay, ये AC generator की simplified diagram है. State the name of components P and Q. P and Q क्या है? Slip rings हैं. Why slip rings? Because this is an AC generator. What are X and Y? Carbon brushes. Okay. Explain why an electromotive force is only induced when the coil is turning. हमने बताना है electromotive force क्यों induce होती है when the coil is turning. What will you say?
the coil, the coil cuts with the magnetic field, magnetic field, generating induced EMF. Simple. Okay. State one possible change that can cause a larger EMF. Use a stronger magnet. Use a stronger magnet. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. Let's further move ahead. Figure 8.2 shows the circuit diagram. अच्छा जी 8.2 क्या शो कर रहा है? Circuit diagram. Okay. Resistors A, B and A, B, C and D are identical. The current in resistor A is 2.4 ampere. अच्छा जी current in resistor A क्या है? 2.4 ampere. Okay. आगे बढ़ते हैं. State the value of current in resistor B. Explain your reason. Current in resistor B क्या होगा बेटा? If you realize this branch, the branch which I am highlighting in yellow, has a total resistance of R. Let's say each resistance has a resistor of R, 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 because all of them are identical. Let's say all of them, each of them have a resistor of R. Now, realize the blue branch. Realize this branch. What is the total resistance here? The total resistance here is 2R. Can you realize resistance has doubled? What will happen to the current? Current will half. Current half हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 ampere. Simple. What is the current in resistance V? 1.2 ampere. Why? Because because the total resistance has doubled, because the total resistance of the two resistors, yeah, of the branch has doubled, hence the current has half. Because the total resistance of the branch of resistor B has doubled, hence current halves. Simple. अब आगे बढ़ते हैं. Calculate the value of current I. You have to calculate the total current I. How will you do that? बेटा इस ब्रांच में 2.4 है, इसमें 1.2 है, लास्ट वाली ब्रांच में, in the last branch you have only one resistor. That means इसमें भी करंट क्या हो जाएगा? 2.4 ampere. This is 2.4, this is 1.2, this is 2.4. Add all of them up. 2.4 plus 1.2 plus 2.4, that is equals to what? 6 amperes is your current. Simple. आगे बढ़ते हैं. The reading on the voltmeter is 5 volts. Calculate the resistance of resistor A. You have to calculate the resistance of resistor A if the voltmeter is reading 5 volts. Which formula will you apply? V is equals to IR. Voltage क्या है? 5. You have to calculate the resistance of resistor R. Okay. Current क्या है? 2.4. Okay. How will you calculate the resistance R? 5 divided by 2.4 is equals to your resistance. Can you calculate the value of resistance? Yes. 2.1 ohms comes out to be your value of resistance of A. Simple. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. State what is meant by background radiation. Radiations that are always present in the surrounding. Radiations that are always present in the environment. Radiations that are always present in the environment. In the environment. Okay. State one source that makes a significant contribution to background radiation. क्या चीज करती है? Radon gas. Secondly, what? What else contributes to background radiation? Cosmic rays. Okay, आगे बढ़ते हैं बेटा. Radioactive isotopes are used in some medical treatments. Okay. Radon 223 is an isotope of radium. Okay. Radium 223 is an isotope of radium. Radium 223 decays by alpha
particles to an isotope of radon. Okay. Complete the nuclide equation for this decay. अच्छा जी alpha particle emit हो रहा है तो mass number will decrease by 4. This will become 219. Proton number will decrease by 2. This will become 86. You have an alpha particle 42. Radium 223 is injected into the body to treat a specific organ. Explain why the source must be inside the body. बेटा सोर्स को हमने इनसाइड द बॉडी क्यों प्लेस करना है? Because alpha particles would not be able to penetrate the skin. अल्फा पार्टिकल्स की इतनी पेनिट्रेटिंग पावर ही नहीं होती to penetrate the skin. That's why your source must be inside the body. अल्फा पार्टिकल्स की इतनी पावर ही नहीं होती कि they can penetrate inside the skin. Hence the source must be inside the body. Hence क्या होना चाहिए? Source must be inside the body. Simple as that. तो यहाँ पे आप लिख लो. You can write it here. You can say alpha particles will be stopped by skin. Hence the source must be inside the body. Alpha particles will be stopped by skin. Hence source must be inside the body. Inside the body. Okay, आगे बढ़ते हैं. An isotope of tactium is injected into the body to detect cancer in one of the organs. Okay. The half-life of this isotope is 6 hours and it decays by emitting gamma radiation. Okay. The radiation is detected outside the body. Okay. Explain why a source of gamma radiation is used. हाँ जी. तो क्या लिखा हुआ है? An isotope of tactium is injected into the body to detect cancer in one of the organs. Okay. The half-life of this isotope is what? 6 hours and it decays by emitting gamma radiation. अब एग्जामिनर कह रहा है कि हमने गामा रेडिएशन ही क्यों यूज की है? द आंसर इज लिटरली इन द नेक्स्ट लाइन. द रेडिएशंस आर डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी. Gamma radiations can travel outside the body, can travel outside the body, they can pass outside the body, hence they are used. Gamma radiations. Gamma radiations can pass outside the body, that's why they are used. Okay. Explain why a source with a short half life must be used. एग्जामिनर पूछ रहा है कि शॉर्ट हाफ लाइफ वाली सोर्स क्यों यूज करनी चाहिए? 6 hours 2 hours वाली सोर्स क्यों यूज करनी चाहिए? Because after a few days, very little radiation is left or little radiation is emitted. We'll say after a few days, very little radiation is emitted. Is emitted. Let's move ahead. Table 10.1 shows data for planets A, B, C, D. Okay. State and explain which one of these planets is closest to the sun. कौन सा planet closest to the sun होगा? Obviously B. Why? Because B has the highest surface temperature. You can write here B. Because B has the highest surface temperature. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. Calculate the surface temperature of D in degree centigrade. अच्छा, we have to convert this D into degree centigrade. Degree centigrade is equals to what? Kelvin plus. Yeah, you can say it like this. Kelvin is equals to degree centigrade plus 273. What is the Kelvin made temperature? 93. You have to calculate degree centigrade plus 273. Can you calculate degree centigrade? Yes, 93 minus 273. What is this temperature in terms of degree centigrade? 93 minus 273.
This comes out to be negative 180 degrees centigrade. An object falls through a height of 2 meter in each of these planets in table 10.1. State and explain on which planet the object falls 2 meter in the shortest time. बेटा ऑब्जेक्ट 2 मीटर शॉर्टेस्ट टाइम में किस प्लैनेट पे फॉल करेगा? On planet A, because planet A has the highest gravitational field strength. On planet A, because planet A has the highest, what? Because planet A has what? Planet A has the highest gravitational field strength. ठीक है? Because planet A has the highest gravitational field strength. Highest gravitational field strength. और यहाँ पे आप लिख सकते हो hence acceleration will be highest. Will be highest. And just for journal knowledge, ये 23 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कौन से प्लैनेट की होती है? जुपिटर. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. ओके, लेट्स गो then move ahead. Okay, figure 10.1 shows some of the stages in the life cycle of a massive star. Massive star expands to form what? Red supergiant. This red supergiant goes under an explosion, forming a supernova nebula which contains heavy elements. Nebula which contains heavy elements. Leaves behind what? Leaves behind either a black hole or a neutron star. Simple. Let's further move it. State the quantity that the brightness of a supernova in a galaxy can be used to determine the distance between the galaxy and the observer. The distance of the galaxy from observer, yeah, from Earth. Easy peasy, lemon squeezy. Let's further move ahead. Oh, this marks the end of the paper. ठीक है, इतना easy था कि I didn't even realize कि it ended. So yeah, this marks the end of the paper. If you have any question, you can ask right away. And yeah, I will be there to help.